the quick revision of unit number 1 in our subject of marketing of services. So friends, in unit number 1, we start up with the meaning and definition part of services. Then we just see the various factors which contributing in the growth of service sector, characteristics, classifications, consumer behavior, relationship marketing, and branding in the case of service organizations. चलो quickly one by one समझते हैं क्या क्या देखा. So first we start up with the कि भाई हमारा service marketing कहाँ से आया, तो it is the part of marketing management. We just see the various examples of services. Then first we start up with the definition part, and before that we just see the reasons कि भाई service sector क्यों grow हो रहा है. So out of all the three major sectors of agriculture, manufacturing, services, so in present era the service sector is the one which is providing the highest amount of salaries and employment per capita income. Even in the KP contributions, so more than 64% GDP contributions is coming from the service sector. The factors which are contributing in the growth of service sectors like government policies, rules, regulations which they change, lifestyle of the people, income, age that affects their buying pattern and creating the demands for the service sector. Business trends, being a corporate house, they just go for the merger and acquisitions. They come up with the more service organizations, new startups, even technology. So various kinds of technologies emerging like internet, mobile, so that enhance the availability and awareness among the people. And even globalizations. More and more foreign players are entering into India. They just do the mergers with the local players. Because of that, the competition is creating, and from customer perspective, they are going to receive the services from the multiple players. So even the domestic and local players will try to give more and more services to the customers. Then we start up with the definition part कि service क्या है. तो in simple word we discuss the service refers to any act or performance which is performed and offered by the one party for another, which is essentially intangible, does not result in the ownership, and it may or may not be tied with the any product. तो सर्विस क्या है, एक प्रकार का परफॉर्मेंस है, एक्ट है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए करती है. इट इज अ वन काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. एट द एंड ऑफ द सर्विस both the parties are going to receive something in return. देन हमने डिफरेंस देखा कि भाई प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है. Then we discuss the characteristics of services कि भाई अगर if you want to define the characteristics or if you want to differentiate the products from services, then these are the characteristics based on which you can differentiate the products and services. तो स्टार्टिंग हमने किया था फर्स्ट इंटेंजिबिलिटी से कि भाई सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इट कैन नॉट फील, सी, टच बिफोर द एक्चुअल बाइंग. तो प्रोडक्ट के केस में हो सकता है, सर्विस के केस में नहीं हो सकता है. एज एंड व्हेन यू यूज द पर्टिकुलर सर्विसेज देन एंड देन ओनली you will come to know about it, how it is. Inseparability कि भाई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर आर सपोज टू बी प्रेजेंट, then and then only service execution can be take place. दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. Heterogeneity, variability कि भाई सर्विस के केस में क्या है, सर्विस आउटकम may be variable, the quality may be differ from transaction to transaction, from service provider to service provider. कि भाई सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बंदा चेंज होगा, इवन सेम बंदा, टाइम चेंज हो गया, सर्विस आउटकम में भी डिफर. पेरिसेबिलिटी कि भाई जो भी अंडर यूटिलाइज सर्विसेज है वो पेरिस हो जाएगी, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं हो सकता. एग्जांपल देखा था हमने मल्टीप्लेक्स कि भाई 3 to 6 का शो है, जितनी सीज फुल हुई दैट्स इट, अनफुलफिल्ड विल गॉन, इट विल नॉट बी यूजफुल. एंड इवन ओनरशिप के सर्विस के केस में आपको ओनरशिप मिलती नहीं है. तो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरियस मार्केटिंग implications है, and being a marketer you need to resolve it. Then we just see the classifications of services. So here we just see that we can classify the services based on the two aspects. One, the service is directed on whom, whether it is on person or his or her belongings, possessions. And second part, the nature of the service act, whether it is a tangible acts or intangible. The service output can be observed, seen, or not. So here we just see that we can have the four types of services, four categories of services based on the processes. Like first one is the people processing, where the service is going to be executed on the particular person, and we have the tangible acts, like examples we just take like haircuts, hospital. Then we can have the possession processing, where the service is going to be executed on the
physical assets, a possession of an individual, and again outcome is tangible like your mobile or TV repairing. Then we just see the mental stimulus or stimulus processing. Again, service is going to be executed on the particular person, but on his mind rather than body. And outcome is intangible acts like we just see the educations, your consultations with the doctors, with the lawyers, even psychologists. Then last, information processing. Again, your service is going to be executed on your intangible assets, and outcome is also intangible like your analysis of your bank, stock market, stock portfolio, legal advice, academic advice, or consulting advice by the lawyers. Then we just see the consumer behavior for the services. Okay, being a service provider, we need to understand buying behavior of our target audience, what they are buying, when they are buying, from where they are buying, how they are buying, from whom they are buying. ये सारी चीजें हमें जाननी है, समझनी है. We also try to understand the various factors like cultural factors, social factors, personal factors, and psychological factors, which will affect what they buy, what they will not buy. So these all are the aspects which we are trying to understand so that we can get the idea how the particular customers reach to the conclusion, how he take a decision, what to buy, what to not. तो इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भाई कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना है, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, रिटेन करना है, सेटिस्फाई करना है. देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा था स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कि भाई कंज्यूमर डिसीजंस लेता है कि भाई ये चीज परचेज करनी है तो उसके लिए क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस स्टेप्स होते हैं. तो स्टार्टिंग विद द नीड रिकॉग्निशन के जहाँ पे कस्टमर्स को पता चलेगा कि नहीं मेरे को ये चीज चाहिए, मेरी ये नीड अनफुलफिल्ड है. फिर वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा पर्सनल नॉन पर्सनल सोर्सेज से. फिर इवेल्यूशंस करेगा, इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके डिसीजन लेगा कि यस मेरे को ये चीज परचेज करनी है. तो वो परचेज डिसीजन होगा, एक्चुअल यूज होगा, कंजम्पशन होगा, तब जाके उसको पता चलेगा. पोस्ट परचेज इवेल्यूशन होगा कि भाई वो सेटिस्फाइड हुआ या डिससेटिस्फाइड हुआ. फिर हमने देखा था रिलेशनशिप मार्केटिंग कि भाई मार्केटिंग के अंदर as a service organization or as a marketer, as a company, we need to focus not only on a part of attracting the new customers, but also on a retention part. कि भाई हमें customers को attract भी करना है, उनको retain भी करना है, loyalty build up करनी है. तो जब तक customers आपके साथ emotionally, personally attached नहीं होगा, as and when he or she will not feel कि you are thinking for their benefits, their values, तब तक वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला नहीं है. तो एज अ मार्केटर आपको क्या करना है, उनको रिटेन करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है. रिलेशनशिप होगी तब जाके वो बंदा लॉयल होगा, तब जाके वो फ्यूचर में रीपरचेज करेगा, आपको रेफरेंस देगा. फिर रिलेशनशिप रखनी है, बट किसके साथ रखनी है, सभी कस्टमर्स के साथ नहीं रखती है. यू ऑल्सो नीड टू इवेल्यूएट योर कस्टमर्स पोर्टफोलियो कि भाई प्लेटिनियम जो है, गोल्ड है, तो ऑल दोज कस्टमर्स हु आर providing you more profitability. They are lesser in numbers, but the profit which we are incurring from them are larger. तो हमें उनको retain करना है, sustain करना है, relationship build up करनी है. Then last point which we take is a branding policies decisions. तो वहां पे हमने देखा कि ब्रांड क्या है, तो ब्रांड इज अ कॉम्बो ऑफ नेम, साइन, सिंबल, जिंगल्स. तो उसका कॉम्बो है. क्यों देते हैं, तो भाई सेपरेट आइडेंटिटी के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए वेरियस ब्रांड एलिमेंट्स हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन फॉर आवर प्रोडक्ट. तो ब्रांड के फायदे हैं कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू. देन ब्रांडिंग के अंदर हमें डिसीजंस लेना है कि वेदर वी विल गो फॉर द कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और इवन एट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ब्रांडिंग. कि भाई हम कॉर्पोरेट लेवल पे ब्रांडिंग करेंगे, मतलब एक ही कॉर्पोरेट नाम यूज करना है और सभी सर्विसेज के लिए, सभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए. इवन सब ब्रांडिंग करना है कि भाई कॉर्पोरेट ब्रांड रखेंगे, उसके साथ कुछ अटैच करके नाम देंगे. और इवन लास्ट इंडिविजुअल ब्रांडिंग के हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइंस के लिए सेपरेट नाम होगा. तो वो डिसीजन हमें ब्रांडिंग के अंदर लेनी है. तो दिस आर द मेजर पॉइंट्स व्हिच वी कवर अप अंडर द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 1. थैंक यू.